Today we're going to start off with nutrition in animals. Yeah, but nutrition in humans is the same thing. What is a balanced diet? When we talk about nutrition, nutrition is one of the very basic characteristic of living organisms, means that how to intake, okay? And what are you actually intaking is actually a part of your diet, a balanced diet. So what is the importance of a balanced diet? Diet is anything that we take in. Taking enough food is diet. But how is it supposed to be balanced? ऐसे balanced हो that it consists of all the food groups in the correct proportion. For example, a correct amount of carbohydrates, proteins, lipids, fiber, vitamin, minerals, and water. Such a diet that can contain all of these necessary food groups in very good quantities, because all of these different food types are very important. For example, carbohydrates is very good source of energy which is found in bread, cereals, pasta. Proteins are needed for growth and repair, which is found in meat, fish, eggs, pulses, and nuts. Then we have lipids which are needed for insulation, energy storage. Butter और oil, fatty foods के अंदर ये lipids मिलते हैं आपको. फाइबर क्या प्रोवाइड करता है? रफेज फॉर द इंटेस्टाइन टू पुश द फूड थ्रू, ताकि आपकी डाइजेशन अच्छी हो सके और एक्सक्रीशन भी अच्छी हो सके. जैसे कि ये फाइबर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में. वाइटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल. मिनरल्स भी बहुत थोड़ी क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं जो आपको नेचुरल प्रोडक्ट से मिल जाते हैं. उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं. देन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, needed for all chemical reactions to take place in the cells. Water is the basic medium of life. वाटर, जूस, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में से आपको वाटर मिल जाता है. एंड ऑल ऑफ देम हैव मेनी रोल्स. अगर हम सिर्फ वाइटामिन्स के फंक्शंस देखें और कुछ मिनरल्स के अंदर आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट है: कैल्शियम एंड आयरन. Calcium, you can see, is needed for your teeth. Calcium is needed for your bones as well. But if you look at iron, iron is needed in your kidneys as well. Iron is also needed for the growth of bones. It's also needed in the blood. और अगर हम vitamins की बात करें, we have vitamin A needed for your eyes. We have vitamin D needed for our bones. Vitamin C is needed for our skin, very important. और vitamin C आपको citrus fruit से मिलती है. विटामिन डी यू कैन गेट फ्रॉम पोल्ट्री. कैल्शियम आपको मिल्क से मिल रही है. विटामिन ए और आयरन दोनों आपको मीट और वेजिटेबल से प्रोवाइड होगी. मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? इट्स अ प्रॉब्लम वेयर अ पर्सन हैज एन अनबैलेंस्ड डाइट, और वो अनबैलेंस्ड डाइट की वजह से इट कैन लीड टू मैल न्यूट्रिशन. एक बंदा जो बैलेंस डाइट ले रहा है, वो बंदा एक खास अमाउंट की कार्ब्स खा रहा है, फाइबर, प्रोटीन, ही इज इनटेकिंग एवरीथिंग. बट व्हाई वुड अ पर्सन गेट मैल न्यूट्रिशन? बिकॉज ही कैन गेट अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहा था. जैसे कि एक मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है स्टारवेशन, टेकिंग इन वेरी लेस एनर्जी. आप बहुत कम खा रहे हो, बॉडी को खाना जब मिल नहीं रहा होगा तो आपकी बॉडी को ही ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी. आपकी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं, योर मसल्स हैं, दैट कैन लीड टू योर वेट लॉस एज वेल, एंड इट कैन ऑल्सो डैमेज योर हार्ट एंड इम्यून सिस्टम. Coronary heart disease is also one of the consequence of malnutrition, which means कि आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल या फैटी फूड खा रहे हैं. नाउ malnutrition का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ खाना कम खा रहे हो. malnutrition आपको ज्यादा खाने से भी हो सकती है. बट द थिंग इज द वन दैट यूर ईटिंग, वो जो आप ज्यादा खा भी रहे हो, खा क्या रहे हो? अगर आप सिर्फ फैट्स और कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो तो आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस हैं, विच कैन रिड्यूस योर सप्लाई टू ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ऑक्सीजन, हार्ट अटैक्स, और बंदे की डेथ भी हो सकती है. कॉन्स्टिपेशन तब होगी जब आपकी डाइट में फाइबर नहीं है. यू आर नॉट ईटिंग एनी ग्रीन वेजिटेबल्स, विच मीन दैट यू आर गोइंग टू बिकम कॉन्स्टिपेटेड एंड योर बॉवल्स आर नॉट गोइंग टू पास. ओबेसिटी कब होगी? जब यू आर टेकिंग इन मोर एनर्जी देन इट इज यूज्ड. आपका कैलोरी डेफिशिट की बजाय कैलोरी इंक्रीज में जा रहा है, एंड देन ऑल ऑफ दैट एक्स्ट्रा एनर्जी वुड बी स्टोर्ड एज फैट एंड योर वेट इज गोइंग टू इंक्रीज. So the nutritional requirements for individuals will vary throughout their lifetime. हर individuals की different needs होती हैं. A kid, a child, a baby, adult, old woman, old man, pregnant woman, a woman who's not pregnant, एक working man. हर बंदे की dietary needs are different through their lifestyle. और हर life stage के ऊपर आपकी dietary needs फर्क है. When you're a baby, आपकी dietary needs फर्क है. When you're an adult, when you're growing above 40, हर stage के ऊपर you have different dietary requirements. An individual will still require the same key food groups but in different quantities, depending on a number of factors such as age, height, sex, activity levels, pregnancy, and breastfeeding. Age बहुत मैटर करता है, because the amount of energy
that young people need increases towards adulthood, because now you need more, with the increasing age your body is growing, you need it for growth, growth of cells as well. और ओल्ड में जाते हुए आपको डिक्रीज लेवल्स हो जाते हैं, एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। एक्टिविटी लेवल्स पे भी डिपेंड करते हैं कि आप कितने फिजिकली एक्टिव हैं। अ पर्सन हु इज नॉट फिजिकली एक्टिव वोंट रिक्वायर दैट मच एनर्जी रादर देन अ पर्सन हु इज रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइजिंग, स्पोर्ट्समैन प्लेइंग है, उसके मसल्स भी तेजी कॉन्ट्रैक्ट करे, एंड द पर्सन इज आल्सो रेस्पायरिंग फास्टर एज वेल। प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। प्रेगनेंसी के अंदर आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट फर्क होंगी, बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन द डेवलपिंग फीटस इनसाइड यू एज वेल, एंड हाउ यू हैव टू कैरी हिम अराउंड। सो कैल्शियम और आयरन बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट्स के अंदर नीडेड होती है, सो यू कैन बिल्ड अप द बोन्स एंड टीथ एंड द ब्लड ऑफ द फीटस एज वेल। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगेन एक्स्ट्रा कैल्शियम इज नीडेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ब्रेस्ट मिल्क फॉर द बेबी एज वेल। तो humans के अंदर we talk about the digestive system and what are different parts of digestive system. Digestive system, you should know that it is an example of an organ system in which several organs are working together to digest and absorb food. Digestion is a process in which relatively large insoluble molecules in food, such as starch and proteins, are broken down into smaller soluble molecules that can be absorbed into the bloodstream and delivered to the cells in the body. These small soluble molecules, such as glucose and amino acids, are used either to provide cells with energy, or they can also build up other molecules to grow. What is the need for this digestive system? आपने large molecules consume किए, इनको पहले तो आपने ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए आपको डाइजेशन चाहिए। यू हैव टू ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। अब इन स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में लेट्स से प्रोटीन्स हैं। अब प्रोटीन्स ने एब्जॉर्ब भी होना है ना कहीं पे, वो भी तो डाइजेशन के बाद होगा, मसल्स में एब्जॉर्ब होना है। आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में फैट है, फैट ने कहीं एब्जॉर्ब होना है। आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए थे वो भी कहीं एब्जॉर्ब होना है। आप सिर्फ बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए तो नहीं ना चीजें खाते। You want कि whatever you are eating as well, they have to be absorbed and stored somewhere in your body as well, so they can properly function in their respective parts. The human digestive system is made up of organs that form the alimentary canal and accessory organs. The alimentary canal is the channel or passage through which the food flows through the body, starting at the mouth and ending at the anus. Digestion occurs with the alimentary canal as well. Alimentary canal आपका mouth से शुरू हो रहा है, all the way down it ends at your anus. And we have different main organs and accessory organs that are going to help us in this digestion. For example, अगर हम मेन ऑर्गन्स की बात करें, वी हैव माउथ, esophagus, stomach, bile duct, large intestine, small intestine, rectum, anus, and appendix. But in सब जगहों पे we have some accessory organs that are helping us as well. For example, mouth के अंदर we have salivary glands present, then we have liver present as well, we have gallbladder producing fluids, we have pancreas as well producing hormones and fluids needed. तो ये human digestive system के अंदर we have the organs as well, and we have accessory organs, both main organs or accessory organs. They are always going to work together in order to break large insoluble molecules into small soluble molecules. अगर हम माउथ की बात करें, माउथ में माउथ इज द मेन ऑर्गन विच इज सपोर्टेड बाय द एक्सेसरी ऑर्गन सलाइवरी ग्लैंड्स। माउथ के अंदर आपके पास होती है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का क्या मतलब होता है? टीथ ब्रेकिंग डाउन। आप खुद च्यू कर रहे हो फूड को, बड़े मॉलिक्यूल्स को आप छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज कर रहे हो जस्ट बाय मैकेनिकल डाइजेशन। च्यूइंग इज द मैकेनिकल mechanism. Up salivary glands are actually going to release amylase enzymes. These amylase enzymes in the saliva basically start digesting starch into maltose, and the food shaped into a bolus ball by the tongue is lubricated in saliva, so it cannot be swallowed easily. Esophagus वो ट्यूब है that connects the mouth to the stomach, where the food bolus goes after being swallowed, and यहाँ पे wave like contractions होती हैं। जब आपके खाना गले में जाता है वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि इस खाने के पीस को नीचे तक गुजारेंगे। दैट इज नोन एज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट एज वेल। फिर ये सारा खाना जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन के बाद अब केमिकल डाइजेशन होगी। मैकेनिकल डाइजेशन था आपका च्यूइंग मैकेनिज्म, आप चबा रहे थे। केमिकली डाइजेशन होगी अब स्टमक में जाके, जहां पे यू हैव डिफरेंट एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल, दैट इज गोइंग टू किल द बैक्टीरिया एंड प्रोवाइडिंग एन ऑप्टिमम पीएच, ताकि एंजाइम्स कैन वर्क बेस्ट एंड दे कैन ब्रेक डाउन योर large molecule into small molecules as well.
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वी हैव अ स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, यहाँ पे जाके एब्जॉर्प्शन इज द मेन प्रोसेस दैट हैपेंस। आपने फूड डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करना तो पर्पस नहीं था ना कि खा के उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना दो बस यहाँ तक खत्म, हम इसलिए खाते पीते हैं। हम खाते पीते क्यों हैं? हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब आएगी? जब हमने जो खाना खाया वो छोटे पीसेस में टूटे, और अब इट शुड बी गो एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडीज। कार्बोहाइड्रेट्स मस्ट गो वेयर दे आर नीडेड, फाइबर मस्ट गो वेयर दे इज नीडेड, प्रोटीन्स अपनी अपनी जगह जाएं, वाइटामिन अपनी अपनी जगह जाएं। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ डाइजेशन, one is the mechanical and chemical digestion, and then comes the absorption part. So all of the nutrients present in our small soluble molecular diet can be absorbed in all those different places. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द रिमेनिंग मटेरियल, और यहाँ पे फीसेस भी स्टोर होना शुरू होते हैं जो कि सारे रेक्टम में जाते हैं, सो दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द एनस एज वेल थ्रू डेफिकेशन और यूरिनेशन। अब कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो इस सब में हमारी हेल्प कर रहे थे, इंक्लूडिंग पैंक्रियाज, लिवर एंड गैल ब्लैडर। पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस ऑल थ्री टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। एमाइलेज breaks down starch, proteases break down proteins, lipases breaks down lipids, and they all together secrete enzymes in an alkaline fluid into the duodenum for digestion to raise the pH of the fluid coming out of the stomach as well. लिवर का एक और काम है, इट प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल क्यों चाहिए होता है? टू इमल्सिफाई फैट्स। आप फैट्स के बड़े इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करोगे, वो कौन करेगा? बाइल। और ये बाइल कहाँ से आ रहा है? लिवर से। गाल ब्लैडर इज द वन दैट स्टोर्स द बाइल। लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है, वो स्टोर कहाँ पे जाके होता है? गाल ब्लैडर से। और गाल ब्लैडर फिर बाद में अपनी डक्ट के थ्रू इसको रिलीज करता है ताकि फैट्स को तोड़ दिया जाए। इज इट क्लियर? समझ आ गई यहाँ तक जो जो डिस्कस किए? जी सर। गुड। So, food taken into the body goes through five different stages during its passage through the alimentary canal. Number one is the ingestion, which is the taking in of substances, for example, food and drink, into the body through the mouth. Second is the mechanical digestion, that is the breakdown of food into smaller pieces without the chemical change to the food molecules. Number three, we have chemical digestion, which is the breakdown of large insoluble molecules into small soluble molecules. उसके बाद होगी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ? इंजेशन, खाना खा लिया। मैकेनिकल डाइजेशन, चबा भी लिया। केमिकल डाइजेशन, स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन। उसके बाद स्टमक में जब ब्रेक डाउन हो गया, नाउ अब आपके स्टमक ने जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ा, आपकी फैट्स को लिपिड्स में तोड़ा, आपके प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ा, ठीक है, उन सब की अब हमने एब्जॉर्प्शन करनी है थ्रू इंटेस्टाइन। एंड द लास्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन, वेयर दे आर स्टोर्ड इन देयर प्लेसेस। हर न्यूट्रिएंट अपनी अपनी जगह जाके बैठ गया बॉडी के अंदर। लिपिड्स स्किन के नीचे चले गए, प्रोटीन्स मसल में चले गए, कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड का हिस्सा बन गए हैं। एंड देन हैपेंस इजेशन, जो आपका रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड रह गया है वो आपका फीसेस के थ्रू, एनस के थ्रू चले जाएगा। जो जो चीजें हमने एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं की थी वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं। Peristalsis is basically that mechanism which helps the food move along the alimentary canal, and muscles in the wall of the small intestine also creates these waves of contraction. सबसे पहले पेरिस्टालसिस आपके एसोफेगस, गले में होना शुरू होती है, जहां पे फूड का बोलस ने नीचे मूव करना होता है। देयर इज कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एट एवरी पॉइंट, जब तक आप निगल नहीं लो अपनी हलक से, खाना ना उतार लो। Peristalsis is controlled by the circular and longitudinal muscles, and this peristalsis is not just happening in your esophagus. This peristalsis is also happening in your intestines as well. वहां पे these circular muscles and longitudinal muscles are also working together to produce this peristalsis movement. और साथ ही साथ इधर ऐसे ऐसे cells भी produce होते हैं which produce mucus, एक थूक की तरह एक म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके खाने के नवाले को लुब्रिकेट कर लेते हैं। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन सो दैट इजीली आपके जब पास अच्छी फाइबर होगी, आपकी डाइट के अंदर अच्छी वेजिटेबल्स और फाइबर हैं, आपका बहुत इजीली फूड डाइजेस्ट भी हो जाएगा। Here you can see this is how the contraction and of the circular muscles and longitudinal muscles push the food down your gullet into the stomach, और इस तरह करते करते वो आगे आगे मूव करते जाते हैं आपके खाने के बोलस को। नाउ ह्यूमंस के अंदर बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, जो हमने कहा ना कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में यू हैव द मेन ऑर्गन्स एज वेल,
विच आर वर्किंग, बट साथ ही साथ आपके पास कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय दीज एक्सेसरी ऑर्गन्स, because the purpose of digestion is to break down large insoluble molecules into smaller soluble molecules that can be absorbed into the bloodstream. Food is partially digested mechanically, churning and emulsification, and in order to break large pieces of food into smaller pieces of food requires enzymes as well. Can you tell me what is the function of enzymes? फिर वो Enzymes बैक्टीरिया में प्रिवेंट करता है, क्या उसके करते हैं? अंदर होने से किल करता है। What is the function of enzymes? Can you tell me again? It speeds up the chemical reaction. हमने enzymes पढ़ा हुआ है. It does what? It basically speeds up the chemical reaction, increases the surface area. कैसे? अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगा ताकि इजीली वो ब्रेक डाउन हो सके। उसने सिर्फ ज्यादा सरफेस एरिया प्रोड्यूस करना होता है, एंड इट प्रोवाइड्स अ गुड सरफेस एरिया सो द रिएक्शन कैन टेक प्लेस फास्टर। Digestion mainly takes place chemically, where bonds holding the large molecules together are broken to make smaller and smaller molecules. This chemical digestion is controlled by enzymes. Mechanical digestion तो आपके दांत, आपके chewing mechanism वो सब कुछ produce कर रहा था. So enzymes are what हमने cover किया हुआ पिछले chapter के अंदर. You should remember it by now. The enzymes are biological catalysts. Their function is to speed up the chemical reactions without themselves being used up or changed in the reaction as well. And there are three main types of enzymes, including carbohydrates, proteases, and lipases. ये आपके पास three main enzymes हैं that are present for carrying out their particular function. Is it clear? जी सर। Good. Can you tell me what are enzymes? The speed of the chemical reaction, जिसके ऊपर breakdown हो रहा था। Good. What else? इनका function क्या होता है enzymes का? What is the function of enzymes? It's a very simple question. सर वो जो रिएक्शन होता है उसको उसे हेल्प करता है, दूसरा स्पीड्स अप द रिएक्शन। ओके, ठीक है, एक दफा इस वीडियो को देखते हैं. स्पीड्स अप द रिएक्शन, प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है. इज इट क्लियर? जी सर। गुड, ठीक है. ओके, let me show you a video as well. Okay, that how does digestion takes place. Contents into your small intestine. Digestion begins the moment you take a bite. Food is shuttled from the mouth to the stomach via the esophagus, a ride that will take about 5 to 8 seconds. The peristalsis is the involuntary muscular force that propels food through the digestive tract. It almost looks like an ocean wave pushing food from one organ to the next. When food reaches the end of your esophagus, a ring-like muscle called the lower esophageal sphincter relaxes and lets the food pass into your stomach. Weakness of the sphincter causes a backflux of stomach acid and heartburn. The stomach is where the real action begins. Digestive juices and enzymes break down the food that you swallowed. This helps make nutrients available for absorption later in the small intestine. The digestive juices are powerful hydrochloric acids that kill pathogens in food and gives the stomach the low pH digestive enzymes need. This acid could literally dissolve most of the other organs in your body. Luckily, your stomach contains a thick mucus lining. However, when there's too much acid in the stomach, it can eat away the inner surface of the stomach, causing an ulcer. The process of digestion takes longer for some types of food than others. Simple carbohydrates, such as an energy drink, break down the fastest.
This explains why many recommend energy drinks for a quick energy boost. Proteins take longer to digest, and fats take the longest time of all. The stomach slowly empties its contents into your small intestine. The muscles of the small intestine mix food with digestive juices from the pancreas, liver, and intestine, and push the mixture forward for further digestion. The walls of the small intestine are covered by tiny finger-like projections called villi. These projections increase the surface area through which nutrients can be absorbed into your bloodstream. As peristalsis continues, the waste products of the digestive process move into the large intestine. The large intestine is named for the diameter of the cavity, not for its length. It is actually much shorter than the small intestine. Its role is to absorb any extra water from the digested material before it is finally excreted. If food passes through too quickly, too little water is absorbed, and you might have diarrhea. If it passes too slowly, your body absorbs too much water, and you may become constipated. It takes about 30 hours for food to move through the large intestine. All in all, the whole process, from the time you swallow food to the time it leaves your body as feces, takes about 2 to 4 days. Solid waste is characteristically brown and stinky. Do you know what causes its odor? If you guessed that bacteria are involved, you'd be right. Microbes that reside in the large intestine make a meal of the leftovers from the small intestine. The smell associated with stool comes from the gases released by bacteria. The large intestine then empties its contents into the rectum. Its job is to let you know that there is a stool to be evacuated, and to hold the stool until the evacuation happens. Thank you for watching this video. So this was a full overview of how the whole alimentary canal actually works. Now, if we discuss the different digestive enzymes that are working in our system, the first one are carbohydrates. Carbohydrates के नाम से पता लग रहा है they are going to break down carbohydrates. ये break down करेंगे आपके carbohydrates को into simple sugars. Carbohydrates are the enzymes that break down carbohydrates to simple sugars such as glucose. Amylase जैसे carbohydrates की type है. Amylase is also one of the carbohydrates that breaks down starch into maltose. फिर pancreas के अंदर भी है और ये small intestine के अंदर भी मौजूद होता है. Amylase एक ऐसा carbohydrate है that breaks down starch into maltose. Because starch क्या है? Starch is also a carbohydrate. Maltase then breaks down maltose into glucose as well. Maltase भी एक carbohydrate है जो कि maltose को glucose के अंदर break down कर देगा. Is it clear? कौन कौन से carbohydrates अभी हमने बात की है? Which carbohydrates have we talked about right now? Can you tell me? ठीक है, हमने एक बात की है amylase और maltase की. ठीक है, so you can see that starch is broken down by amylase into maltose, then maltose is broken into ये भी और वो सारा होता है. ठीक है, so carbohydrates क्या करते हैं? Starch is broken down into glucose using two enzymes, amylase and maltase. Proteases are also another type of carbohydrates. Proteases are a group of enzymes that break down proteins into amino acid. Pepsin is one of the enzyme जो कि proteases के अंदर fall करता है. It is made in the stomach which breaks down proteins into smaller polypeptide chains. Proteases made in the pancreas and small intestine break the peptides into amino acids. So here you can see these are how proteins are being broken down using pepsin and proteases. Lipases are the third type of enzyme. Lipases break down करेंगी lipids को into fatty acids and glycerol. Lipase enzymes are produced in the pancreas and they are secreted into the small intestine where a molecule of lipid is broken down into a molecule of glycerol and fatty acids. ये आपके पास दो products आ जाते हैं when lipid is basically broken down by lipase. अब if we discuss that what is the function of bile that is produced by humans. Bile आपके पास कहाँ से produce हो रहा था? Liver से.
Liver is the accessory organ that is actually producing bile. Bile is an alkaline substance produced by the cells in the liver, and before being released into the small intestine, पहले यहाँ पे जो भी bile produce होता है वो सारा store किसमें होता है? गैल ब्लैडर के अंदर. गॉल ब्लैडर में जब स्टोर हो जाता है फिर ये डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम इसको रिलीज करते हैं. Bile has a total of two main roles. Number one, it neutralizes the hydrochloric acid from the stomach, and the alkaline properties of the bile allow for this to occur. क्योंकि स्टमक ने इतना ज्यादा एसिडिक मीडियम होता है कि बाइल एक एल्कली है. अब एक जब एल्कली विद अ हाई पीएच कंबाइंस विद द स्टमक एसिड, ठीक है, ये मिलके उस पूरे मीडियम को न्यूट्रल कर देता है. दिस न्यूट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बाइल आगे करता है, सो द एंजाइम्स कैन गेट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट एंड दे कैन वर्क बेस्ट इन द स्टमक एज वेल. Breaking apart these large drops of fat into smaller ones, this is known as emulsification. ये है वो दूसरा काम जो बाइल करता है. पहला काम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन. दूसरा काम है emulsification. Emulsification is breaking down large droplets of fat into smaller ones, increasing their surface area. जब भी कोई large droplets छोटे छोटे droplets में तब्दील होते हैं, what happens? These small droplets are having now a what? A larger surface area. और जब इनके पास एक larger surface area होगा, they are going to be broken down very much easily at a very fast rate as well. अब बहुत faster rate के ऊपर ये easily break down हो जाएंगे. So that is how lipids are broken down into glycerol and fatty acids. Here you can see this is a large fat droplet which is broken down into glycerol and fatty acids. अब वो देखो ये तो लिपिड्स ब्रेक डाउन हो गए थे, फिर एक बड़े ड्रॉपलेट्स को और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बाइल ने आके तोड़ा था. सो देर आर टू थिंग्स एक्टिंग ऑन द फैट्स. द लाइपेज एंजाइम ओनली टर्न लिपिड्स टू फैटी एसिड ड्रॉपलेट्स, एंड देन फैटी एसिड को ड्रॉपलेट्स को बाइल ने स्मॉल ड्रॉपलेट्स के अंदर बदल दिया था. So lipases are the enzymes that are breaking down the lipids, and bile is the substance that breaks down large fat droplets to a smaller fat droplets as well. And that is where absorption is now going to start once the digestion is done. The stages of the food breakdown, अगर आप देखें, food is taken into the body that goes through several different stages during its passage through the alimentary canal. It goes through ingestion, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन. अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में. हमने पहले तीन ऑलरेडी कवर कर लिए. नाउ वी गोइंग टू सी हाउ डज दिस एब्जॉर्प्शन बेसिकली टेक प्लेस. मैकेनिकल डाइजेशन आपके पास च्यूइंग और सॉलिंग की वजह से माउथ के अंदर ही हो गई थी, और माउथ के अंदर ही केमिकल डाइजेशन भी हो गई थी व्हेन दोस सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस्ड एमाइलेज एंड दे ब्रोक डाउन स्टार्च टू माल्टोज. उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन पेरिस्टालसिस के थ्रू स्टमक में हुई थी, और स्टमक के अंदर ही केमिकल डाइजेशन भी हुई थी वेयर प्रोटीएजेस एक्टेड ऑन एज वेल. इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी केमिकल डाइजेशन हुई थी, बट द एब्जॉर्प्शन बेसिकली स्टार्ट्स मेनली फ्रॉम द इंटेस्टाइनल पार्ट. एब्जॉर्प्शन क्या है? अब सब कुछ टूट टाट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तब्दील हो चुका है. Now absorption is basically the movement of the small digested food molecules from the digestive system into the blood and lymph. Absorption of these small soluble molecules occurs through diffusion, and it also sometimes occurs with the help of active transport. Water is absorbed by osmosis into the small intestine, and after absorption, assimilation also occurs. कि जब एक चीज आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है इंटेस्टाइन के थ्रू, अब उसने जगह जगह बॉडी में जाके अपनी अपनी जगह पे स्टोर भी होना है, और जो चीजें स्टोर नहीं होंगी वो आपके पास इजेशन के अंदर दाखिल हो जाएंगी. सो द फोर्थ, fifth, and sixth process occur all together as well. The small intestine is very much adapted for absorption and is a very long and a highly folded surface with millions of microvilli. ये जो इतने ज्यादा microvilli होते हैं ना आपके intestine के अंदर, these microvilli basically increase the surface area for absorption, ताकि आपके पास जो absorption है वो एक faster rate के ऊपर और efficiently हो सके. Villi have several specific adaptations which allow for the rapid adoption of their substances. They have a large surface area and they allow maximum space for the absorption of different substances. इनकी walls भी इतनी thin होती हैं ताकि आपके diffusion का distance भी बहुत small हो जाए. And when there is a smaller diffusion distance, that means that diffusion would take place faster as well.
It also provides a very steep concentration gradient because it's also supplied with a lot of blood capillaries lacteal के through, और enzymes भी काफी प्रोड्यूस होते हैं. Due to this lacteal, a wide range of absorption बहुत जल्दी जल्दी आपस exchange वगैरह होती जाती है.